And while Congress claimed to be shocked and affronted by the behaviour of the Andhra MPs, their own minister exhibited the same in the Delhi Assembly, which also saw similar scenes when the opposition BJP and the Congress, which is providing outside support to the government, stormed the well of the House. As if taking a cue from the Parliament, BJP and Congress MLAs in Delhi in the well of the House, demanding Law Minister Somnath Bharti's resignation. कानून मंत्री को बर्खास्त करिए, उसके बाद सदन चलेगा, उसके पहले सदन नहीं चलेगा. The scenes just as dramatic, with Congress MLA Arif Mohammad Khan snatching papers from the Speaker's desk, even attempting to break both the Speaker's and the Chief Minister's mic. The chaos led to 4 adjournments. स्पीकर की हैसियत से नहीं चला ले, बल्कि वो एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से इस हाउस को कंडक्ट करना चाहते हैं. तो देखिए, अगर अनपार्लियामेंट्री तरीके से अगर स्पीकर का बिहेवियर रहेगा तो वो कैसे उम्मीद लगाते हैं कि यहाँ चुने हुए जो लोग बैठे हुए हैं वो उसको बरकरार रखेंगे. With at least 2 members of the house going around tearing files and papers and even trying to wrench out mics. In fact, they say that if the speaker does not give in to their demands, then they can expect similar scenes tomorrow as well. ये आंदोलन बंद नहीं होगा, सदन के अंदर भी होगा, सदन के बाहर भी होगा. हम दिल्ली की मर्यादा को, दिल्ली की गरिमा को, दिल्ली की सरकार के ऊपर इस तरह का थप्पा नहीं लगने देंगे. दोनों मिले हुए हैं, बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले. तो आज ऐसा क्यों हुआ कि इन दोनों को खुल के सामने आना पड़ा? अभी तक तो छिप के कर रहे थे. वो इसलिए हुआ मुकेश अंबानी के खिलाफ जो FIR हुई 2 दिन पहले. As the Parliament witnessed perhaps the worst day in its history, scenes in Delhi Assembly were not far behind. The pandemonium resulted in no work. But it's also the first time that the BJP and the Congress appear to be working together. Reporting from New Delhi with Siddharth Pandey, Anchal Vora, NDTV.